फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ इंट्राडे सर मौजूद भी हैं। डेविस सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। नंबर्स पे मैं बातचीत करूंगा डिटेल में, लेकिन उससे पहले आज का सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम जो था वो था एमपीसी का आउटकम, और रफली 25 बेसिस पॉइंट यानी कि 1/4% की बढ़ोतरी होते हुए दिखाई पड़ी है ब्याज दरों में एक बार फिर से। आपका पहला रिएक्शन कितना, मतलब गोइंग फॉरवर्ड क्या ये पॉज मान लूं या सिचुएशन को देखते हुए एक दो पॉज और अभी लगेंगे, एक दो और हाइक अभी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं? नमस्ते, इट्स गुड टू बी विद सीएनबीसी आवाज। आज का जो 25 बेसिस पॉइंट्स एडजस्टमेंट हो गया, आई थिंक इट वाज एक्सपेक्टेड. मोस्ट ऑफ द मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग दिस, बट आई थिंक दिस इज नॉट द एंड. वी मे सी वन मोर हाइक, but whether it is in the next one or it may wait for a few more months will have to be seen. But eventually I think the rates will start declining, perhaps after 6 to 8 months. 6 से 8 महीने बाद शायद ब्याज दरों में कटौती होती दिखाई पड़े, लेकिन ये बात सही है कि हाँ, इन्फ्लेशन में बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अच्छा डेविस सर, मैं आता हूँ अब नंबर्स के ऊपर, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के जो नंबर्स देखने को मिले थे उसमें ग्रॉस एनपीए के अंदर रिडक्शन है, नेट एनपीए के अंदर भी स्लाइटली मोरलेस एनएनपीए जो है वो भी मोरलेस फ्लैटिश साइड पर ही आते हुए दिखाई पड़े हैं, लेकिन रेशियोज जो हैं वो भी जो कमी हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी में जो इंप्रूवमेंट हो रहा है। अभी का सिचुएशन सिनेरियो कैसा है Q4 का? हाउ वाज Q3? थैंक यू। जीएनपी अभी इस साल में वी हैव कम डाउन टू लोएस्ट लेवल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सो दैट ट्रेंड विल कंटिन्यू इनटू फोर्थ क्वार्टर. Or our fourth quarter results will be in line with what we have had in the first 2-3 quarters. So overall, this year is going to be a very good year for Ujjivan. We have had 293 crore profit in this third quarter, and the fourth quarter will be almost in line with that as well. Okay. सर, AUM ग्रोथ को लेकर क्या सिचुएशन है प्रेजेंटली, और गोइंग फॉरवर्ड क्या इसमें एक्सपेक्टेशन रख के चला जा सकता है, जो रीजनेबल एक्सपेक्टेशन होगी Q4 की या ईयर एंड के ऑनवर्ड्स की? इस साल का AUM ग्रोथ वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी लिटिल अबाउट 30% व्हेन वी कम टू द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. That is a good turnaround after last year, and next year financial year 24 में we expect at least to have 20 to 22% growth in AUM going forward. Okay. सर, NIMs वाइज पिछले कई क्वार्टर्स के मैं नंबर्स देख रहा हूं और एक अच्छी ग्रोथ वहां पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखूं तो कहां 10% और कहां आप सीधे 20% की रेंज में NIMs पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो जिस तरह की ट्रेजेक्टरी ग्रोथ की मेंटेन की है, सस्टेनेबल लेवल से ही है 19% की रेंज में, या मान के चले 14-15% पे सस्टेनेबल रहेंगे मार्जिन्स? And now our NIM is 9.4% this quarter. Total yield is at that 20% level. Okay. But going forward, NIM will be slightly under pressure because of the higher deposit rates that have come in and have been there for the last few months. Yeah. But it will be at the overall level for this year, we expect it to be 9.5 for the full year. Okay, सर, 2-3 सवाल और। पहला कि जो कंपनी के राइट ऑफ्स थे उनको हायर साइड पे ही देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट 8 क्वार्टर में करीब 1260 करोड़ रुपए के आसपास के राइट ऑफ्स आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? राइट ऑफ्स ये प्रॉब्लम है, दिस इज बिकॉज ऑफ द कोविड कंडीशंस, लेकिन राइट ऑफ के बाद भी we are looking at recovery. We have had in this year so far in 3 quarters we have about 90 crores of recovery from the written off loans. We expect in fourth quarter also some further recovery, so that would be taking that total number to about 120. So although there are write-offs, we are still working with our customers to make the recoveries wherever possible. तो डेविस सर, ये कितना रिस्ट्रक्चर्ड बुक्स जो होंगी वो बैड हो सकती हैं, या फिर जिनको आप रिटर्न ऑफ करके चल रहे हो, ऐसा कोई नंबर, कितना परसेंटेज? No, actually our write-offs have reduced now this year, and going forward we expect that to come down. So overall we are expecting a better credit quality in the fourth quarter as well as into next year. Okay. सर, कुछ स्टेक सेल की बज़ बहुत समय से मार्केट में रहती है, तो ऐसा कोई स्टेक सेल प्लान, किसी शूटर से बातचीत, कोई एक छोटा चंक जो कि बैंक बेच सकता हो?
नहीं, अभी हमारा रिवर्स मर्जर चल रहा है, दी होल्डिंग कंपनी टू बी रिवर्स मर्ज इनटू द बैंक. That is in the final stages. We have received Reserve Bank of India approval. We are waiting for SEBI approval. Uske baad we will go to NCLT, and then finally, once that is approved, we will look at the next stage. So for the moment, we are not doing anything on the other front, on any other discussions. Okay, तो ये जो रिवर्स मर्जर का कंप्लीशन है, by when are you expecting कि ये पूरा हो जाना चाहिए? पूरा अगस्त सितंबर में खत्म होना चाहिए. ओके, एक और चीज सर, जो स्ट्रॉन्ग कस्टमर ग्रोथ है, वो मोमेंटम क्योंकि हमने Q3 में भी देखा है, तो ये जो मोमेंटम है ये कैरी फॉरवर्ड करेगा Q4 ऑनवर्ड्स? जरूर, because for example today I am here at the launch of our new app. Okay. It's a voice aided app to assist semi-literate and illiterate customers. So this is going to be a game changer for us. That will add to our customer base. And like this, we have many more such offerings on the digital front going forward, which will help us to improve our customer base, especially on the deposit side. We are even trying to introduce basic loan, aspects which can be done digitally for our customers, especially the semi-literate and literate. So our objective is financial inclusion in the fastest way and in the best possible way, and that is really what we are trying to achieve. अच्छा डेविस सर, ये ऐप के साथ साथ मैं डिजिटल पे ही आने वाला था कि डिजिटल स्पेस को लेकर अभी बैंक किस किस चीज़ों पे थ्रस्ट दे रहा है, अदर देन ये ऐप और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप डिजिटली कामकाज कर रहे हो? Digitally, we are, doing, obviously we are trying to make, the video KYC to help customers on board so that is possible. We are also trying to work with some of the loan products which can be done digitally. So eventually there will be more offerings which can be done digitally other than what we are doing right now. Okay. इंटरेस्ट रेट सिनेरियो सर हायर साइड पर है, इसकी बात हमने शुरुआत में की ही थी और वो अभी शायद बना भी रहेगा 2-3 क्वार्टर तक और. तो इस सिचुएशन में NIMs को प्रोटेक्ट करना कितना चैलेंजिंग रहेगा गोइंग फॉरवर्ड? NIMs को लेकर नंबर जो होगा वो क्या रीजनेबल नंबर हम मान के चल सकते हैं? अभी निम थर्ड क्वार्टर में 9.4%. Going forward, we hope it will be 9.3 to 9.5 in that range. Because one of the things that we need to keep in mind is that so far we have, on the lending side, we have had only one rate increase in September. We have held back that was a 50 basis points rise. We have held back on increasing loans because we believe that we should support our customers coming back into the economy post-COVID. But we may have to look at that rate increase in the beginning of March, now that the RBI has announced a 0.25% rise. But exactly how much that is, we will have to see. That will help our NIM, but the objective is to maintain a stable position going forward. Okay. सर, मैं ब्रेकअप भी देख रहा था जिसमें ग्रुप लोन्स, माइक्रो लोन्स, फाइनेंशियल ग्रुप्स, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, ये तीनों की सीक्वेंशियल बेसिस पे भी आते हुए दिखाई पड़ी और YOY बेसिस पर भी. हालांकि MSE स्पेस के अंदर सीक्वेंशियली थोड़ा सा सबड्यूड नंबर जरूर देखने को मिला है. सो एनी कॉज ऑफ कंसर्न या कोई ऐसा इनमें से सेगमेंट जिसके ऊपर आप नजर रखे हुए हो जो टू वॉच हो? नहीं, कोविड के बाद when we came back, the microfinance business took off very fast because that is the business which was able to grow, and that is where we also had a good setup. Now in the MSE space, what we are doing is we are changing our product mix a little bit, and we have also introduced a new app which we are going to put in place, and a loan origination system. इसलिए this third quarter में we had to slow down a little bit, but our emphasis is to grow both housing and micro and small enterprises. These are two growth segments that we are looking at. और अगले साल में we will see that growth picking up, and I think in terms of percentage growth, they may be slightly higher than the micro loans or micro banking. Okay. डेविड सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, नंबर्स पे पूरी तरह से क्लैरिटी देने के लिए और अपना टेक हमें
बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय में देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। एक बार उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्टॉक लेकर आइए, बिल्कुल फ्लैट है 292-93, ये उज्जीवन का है इनफैक्ट ये दाम। आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, उसका स्टॉक लेकर आइए कि वहाँ पर किस तरह का रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो मर्जर प्रोसेस है उसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्टॉक जो है वो करीब 1 से 1.5% ऊपर 30 रुपये की रेंज में भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आगे बातचीत जारी रखते हैं।